Good morning students, this is Neha Jain from Shiv Jyoti Educational Group Kota. Children, today we will start with the revision of chapter 2 whole numbers. I will just like to throw light on the basic concepts of this chapter, okay? In the previous video, I have just given you the detailed description. Now I will just throw light on the basic concepts of this chapter. So to start with, first we will discuss the core points of this chapter. First we will define, this is the definition of the whole numbers. What are whole numbers? Okay. So what are whole numbers? Children, you have already studied in the previous classes regarding the natural numbers. आप सभी को पता है कि natural numbers क्या होते हैं? That is 1, 2, 3, 4, 5 and so on. This is the set of natural numbers. But when we include 0 in the set of natural numbers, it becomes the whole number. That is 0, 1, 2, 3, 4, 5 and so on. So when the 0 is included in the set of natural numbers, it becomes whole number. So what are whole numbers? क्या होता है whole numbers? That is, it is the combination of the natural number including 0 is known as whole number. That is, natural numbers along with 0, natural numbers along with 0 are known as whole numbers. Got it? तो क्या होते हैं होल नंबर्स? यदि हम नेचुरल नंबर्स में 0 को इंक्लूड कर लेते हैं तब हम उसको कहते हैं कि दे आर होल नंबर्स. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज that is predecessor and successor. What is a predecessor and what is a successor? So just see children over here. Now next topic is predecessor and successor. predecessor का मतलब होता है जो before आता है, that is before. और सक्सेसर का मतलब होता है डेट कम्स आफ्टर. तो प्रीडिसेसर क्या होता है? जो बिफोर आता है, पहले आता है, उसको हम बोलते हैं प्रीडिसेसर. और सक्सेसर क्या होता है? जो बाद में आता है. प्रीडिसेसर के केस में एज फॉर एन एग्जाम्पल आई एम जस्ट राइटिंग द नंबर ओवर हियर. सपोज करो मैं एक नंबर लिखा है यहाँ पे 5. द नंबर गिवन इज 5. अब मैंने आपको बोला है कि इसका आपको प्रीडिसेसर फाइंड आउट करना है. डेट इज यू हैव टू फाइंड द predecessor of the number 5. तो predecessor क्या होगा? That is the number which comes just before 5. तो 5 के just पहले कौन सा नंबर होता है? That is the number 4. तो जो भी नंबर गिवन है, यदि आप उसमें -1 कर देंगे, so you will just get the predecessor of a number. तो 5 का predecessor क्या हो गया? 4 हो गया. Similarly यदि मैं बोलूँ कि 4 का predecessor आपको फाइंड करना है, मतलब 4 के जस्ट पहले what number comes just before the 4 that you have to write it down, वो क्या कहलाएगा? predecessor. तो 4 में हमने -1 किया, so number is 3. तो 4 का predecessor क्या हो गया? 3. 5 का क्या हो गया? 4. so on. तो जब भी हमें predecessor निकालना होता है किसी भी नंबर का, तो उस नंबर से आप क्या कर देते हैं? यू जस्ट सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम दैट पर्टिकुलर नंबर सो दैट यू कैन गेट द predecessor ऑफ द गिवन नंबर. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ जस्ट कम टू द सक्सेसर. सक्सेसर मतलब जो बाद में आता है. predecessor का जो जस्ट अपोजिट होगा, जस्ट वाइस वर्सा होगा, वो क्या कहलाएगा? सक्सेसर. जो नंबर बाद में आता है. सपोज आई एम राइटिंग द नंबर 10. द नंबर इज 10 and you have been asked to find the successor of the number 10. तो 10 के जस्ट बाद क्या आता है? which number comes next to 10? तो 10 के बाद क्या आता है? it comes 11. मतलब सक्सेसर जब भी आपको फाइंड आउट करना रहता है तो आप क्या कर देते? गिवन नंबर में 1 को ऐड कर देते. इज इट क्लियर? सपोज करो यदि मैंने बोला है यू हैव टू फाइंड द सक्सेसर ऑफ द नंबर 11. दैट मीन्स if you have to just find the number which comes after 11, so you will just add +1, so it becomes 12. तो predecessor का मतलब क्या होता है? जो नंबर जस्ट पहले आता है, उस केस में जो नंबर गिवन है जिसका आपको predecessor निकालना है, आप वहाँ पे क्या कर देंगे? You will just do -1.
that is you will subtract 1 from the number. And if you have just want to find the successor, यदि आपको successor निकालना है तो उस केस में आप क्या करेंगे, जिस नंबर का भी आपको successor निकालना है you will just add 1 to the given number. Is it clear students? तो predecessor का मतलब होता है before, that is the number previous to the given number, and successor means the number which comes just after the given number. Is it clear now? Okay. अब सपोज करो ये तो बहुत छोटे छोटे नंबर्स थे, दीज वर द स्मॉल नंबर्स. अब सपोज करो आपके पास कोई बहुत बिग डिजिट दे रखी है, जस्ट सी द नंबर 43281. ओके, दिस नंबर इज गिवन टू यू. अब आपको बोला गया है कि आपको उसका क्या फाइंड आउट करना है, प्रेडिसेसर फाइंड करना है. प्रेडिसेसर फाइंड करना है मतलब आप क्या करेंगे, यू विल जस्ट सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम दिस गिवन नंबर. तो जब आप इसमें से -1 करेंगे तो आपके पास क्या नंबर आएगा, दैट इज 08234. दैट इज 43280 इज द प्रेडिसेसर ऑफ द नंबर 43281. हम प्रेडिसेसर निकालना था मतलब जस्ट पहले का नंबर निकालना था, इसलिए आपने जो नंबर यहाँ पे दे रखा था उसमें से आपने इसको -1 किया है. Is it clear? Similarly, if I am taking the next digit over here, 92896. Okay, this is the number given to you. Now you have been asked to just find the successor of the number. Successor का मतलब क्या, इसकी जो नंबर आपको गिवन है you have to just find the next number. Okay, तो नेक्स्ट नंबर निकालना मतलब आप क्या करेंगे, that is you will just add 1 to the given number. तो अब हम इसमें क्या कर देंगे, you will just +1. तो 6 + 1 7, 9, 8, 2, 9. So successor of 92896 is 92897. Is that clear students? Now just come to the next topic children. The next topic is the number line. I hope so children that you know what is the number line. आपने previous classes में पढ़ा है, you have studied about the number line. Now just see a number line. If I am just talking about the number line, क्या मीनिंग निकलता है इन ईजी वे, क्या बोल सकते हैं, इट इज़ द लाइन ऑफ नंबर्स. व्हाट इज द नंबर लाइन, इट इज़ द लाइन ऑफ नंबर्स. नंबर लाइन क्या होता है, लाइन ऑफ numbers. As you all know that towards the right of 0 there exist all the positive integers and towards the left of 0 there are all negative integers. तो अभी हम यहाँ पे integers की बात नहीं कर रहे, we are just talking about the whole number. Okay, so I will just draw the number line over here. I am starting from the whole number over here. 0 is the smallest whole number. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, up till 9 we will take. Okay, this is 9. So this is the line of numbers. Okay, I have just taken this number line. अब suppose करो what you have to do, if you have to just perform the operation of addition on the number line. Number line पे हम addition कैसे करते हैं, so just see. First we will do the mathematical operation of addition on the number line. Suppose करो हमको नंबर ऐड करना है, you have been given to add 2 + 3 on the number line. आपको क्या करना है, 2 + 3 का सम निकालना है and you have to represent it on a number line. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, you will start from 2. So where is 2? Here is 2. Okay, now what you have to add, you have to add 3. मतलब कितने जम्प्स लेंगे आप, you will take 3 jumps. So just starting from 2, 1, 2, 3. तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आ गया, जब आप 2 + 3 को ऐड करते हैं तो क्या आता है 5. तो यदि आपको इफ़ यू हैव टू डू द एडिशन ऑन द नंबर लाइन तो आप क्या करेंगे, जो भी नंबर आपको ऐड करना है उतने जंप्स आप लेंगे. इज इट क्लियर? तो हम क्या करें, 2 में 3 को ऐड करना है, दैट इज यू हैव टू ऐड 3 to 2. तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम 2. कितना ऐड करना है, 3. सो यू विल टेक 3 जंप्स, दैट इज 1, 2, 3. So your addition comes out to be 5. Is it clear students? Now second is the subtraction. How to perform the operation of subtraction on the number line. Subtraction कैसे करते हैं, suppose करो, one more thing is that students, whenever you are doing the addition on the number line, you have to move towards the right.
जब भी आप एडिशन कर रहे हैं तो आप नंबर लाइन पर राइट में मूव करेंगे। यू कैन सी हियर दैट आई मूव टुवर्ड्स दी राइट। जब आप सब्ट्रैक्शन करते हैं तो जस्ट वाइस वर्सा हो जाता है, इसी का अपोजिट हो जाता है, तब आप क्या करेंगे, लेफ्ट में मूव करेंगे। Whenever you are just performing the mathematical operation of subtraction, then you will move towards the left. As for an example, I am writing here 6 minus 4. Okay, what you have to perform now? 6 minus 4. तो अब स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम, क्योंकि सब्ट्रैक्शन हो रहा है, will just move towards the left. एडिशन के समय हम राइट में मूव कर रहे थे और सब्ट्रैक्शन के समय हम कहाँ पे मूव करेंगे, we will move towards the left. So we'll start from 6. I'm just rubbing this. Now just see, we will start from 6 और कितना माइनस करना है, 4 को 6 में से माइनस करना है, that is you have to subtract 4 from a number 6. तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 6 से स्टार्ट करेंगे। कितने जम्प्स लेंगे, क्योंकि हमको क्या माइनस करना है, you have to subtract a number 4. That means you will take 4 jumps towards the left. So 1, 2, 3 and 4. So your answer comes out to be 2. हमको क्या करना था, 4 को माइनस करना था, किस में से माइनस करना था, 6 से. So we have started subtraction from a number 6 and we have taken 4 jumps as we have to subtract a number 4. So 1, 2, 3 and 4. So 6 minus 4 is 2. So this is the way that you can do subtraction on a number line. Now the third operation, you can also do the operation of multiplication on the number line. आप multiplication को भी number line पे represent कर सकते हैं. Let's see how you can represent it. So we will just do now multiplication on a number line. Multiplication on number line. अब suppose करो आपको क्या करना है, multiply 2 into 4. What you have to do? That is 2 into 4. 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? That is 4 times. So let's see. Now, how many jumps you have to take? You have to take 4 jumps. So 2 4s are 8. So here just see. We'll start from 2. Okay. Now what you have to do? You have to take the how many? 2 4s are 8. 4 को आप क्या करें, 4 into 2. तो जब आप करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, that is you will take the slot over here, 1 2 2 again 2 and again 2. So 2 4s are 8. You can see when you are performing the operation of multiplication over here, so it comes out to be 4 2s are 8. या आप इसको यहाँ से भी स्टार्ट करते हैं, यू कैन सी. अभी हमने इसको चेंज कर दिया है, दैट इज 4 2s are 8. 4 को हमको कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम्स. तो जितने टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना है उतने ही जम्प्स आप लेंगे. ये 2 क्या क्या स्पेसिफाई कर रहा है, इट स्पेसिफाई द नंबर ऑफ जम्प्स एंड द नंबर ऑफ टाइम्स. तो आपको कितने बार करना है, गैपिंग कितनी की रखनी है, यू हैव टू टेक द गैप ऑफ 2. 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, गैप भी आपको कितना लेना है, 2 का लेना है. और कितने का, कितनी बार आपको जंप लेना है, दैट इज यू हैव टू टेक द जंप फॉर द 2 टाइम्स. सो हमने कहाँ से स्टार्ट किया, हम 2 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 से. सो विल स्टार्ट फ्रॉम 4. कितने जंप लेना है, 2 जंप्स लेना है. और कितनी बार लेना है, दैट इज यू हैव टू टेक फॉर द 2 टाइम्स. तो हमने क्या किया, यहाँ पे हम 2 जंप्स लेंगे. सो 1 and 2. और ये क्या बता रहा है, ये 2 हमें क्या बता रहा है, गैपिंग भी बता रहा है. सो दिस 2 स्पेसिफाई द गैपिंग, इट स्पेसिफाई द गैप प्लस द नंबर ऑफ टाइम्स, plus the number of times. Is it clear? So 4 2s are 8. Suppose करो हम एक और एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं. I am just taking the example of multiplication over here. That is, just take 2 into what you can take. Suppose करो 6 into 2 लेते हैं. You are taking 6 into 2. तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, 6 से स्टार्ट करेंगे. इस नंबर लाइन को आप एक्सटेंड कर सकते हो, डेट इज 10
11 एंड 12। अब कहाँ से स्टार्ट करोगे आप? 6 से स्टार्ट करोगे। सो यू कैन सी यू विल स्टार्ट फ्रॉम 6 और गैपिंग कितने की रखेंगे हम? अगेन 2 2 की रखेंगे। सो इट कम्स आउट टू, जब आप 6 इंटू 2 करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? इट इज 6 इंटू 2 इज 12। Is it clear, students? Got it now? Now we will just study about the last property, that is the properties of whole number. Properties of whole number. So what is the first property of a whole number? That is the closure property. Closure property. So whole numbers are closed under addition and the multiplication. So when you are just adding any two whole numbers where A is also a whole number and B is also a whole number, so its sums will be also a whole number. Its sum will also be a whole number. Similarly, if you are just multiplying, if A is a whole number getting multiplied by the another whole number, again its result will be a whole number. Got it? Now the second property is the commutative property. That is the commutative. What does it say? That A plus B is equals to B plus A. That is, if you are adding any two whole numbers, you can just also add it in the reverse order. As for an example, 2 plus 1 is equals to 1 plus 2, which is equals to 3. Similarly, it is also, commutative property is also closed for multiplication. That is, A into B is equals to B into A. That is, 6 into 2 is equals to 2 into 6, which comes out to be 12. Got it? Now the third property is known as the associative property. Associative property. What does it say? If there are three whole numbers such that A, B and C, then A plus B plus C is equals to A plus B plus C. What you are doing in the associative property? You are just doing the pairing of the whole numbers. In the left hand side, you can see that first of all you are adding the first two whole numbers and the result will be added to the third whole number. Similarly, towards the right hand side, you are adding the second and the third whole number and the result is getting added to the first whole number. Similarly, it is closed for associative property is closed for the multiplication also. So A into B into C is equals to A into B into C. Only the multiplication sign, only the addition sign has been changed to the multiplication. Is it clear? But it does not follow in the case of the subtraction or the division. Now the last property is known as the distributive property. That is the addition over multiplication. Last property is the distributive property. Now what does the distributive property says? That is, A into B plus C is equals to, that is, जब भी when one of the term is outside the bracket, then we will just multiply this term with all the terms inside the bracket. That is, first of all you multiply A into B, addition sign will remain as it is. Then you multiply this term outside the bracket with the second term inside the bracket. So A into B plus C is equal to A into B plus A into C. So these are the children basic concepts of the whole numbers. Now we will just start solving the questions of the exercise. So please open your books. We will start with the exercise. That is exercise 2.1. Everybody get ready with the books on rough copies. Exercise 2.1, just take out page number 31. Page number 31. Now just see the first question. Go through it.
Write the next three natural numbers after 10999. Question number first, you have to write the three natural numbers after 10,999. क्या बोला गया आपको? थ्री नेचुरल नंबर्स लिखने हैं. नेक्स्ट नेचुरल नंबर्स मतलब यू हैव टू राइट द सक्सेसर्स. तो हम क्या करेंगे इसमें? +1 करेंगे. तो व्हाट नंबर यू विल गेट? दैट इज 11,000. आपको कितने नंबर्स निकालने हैं? अगेन +1, सो इट कम्स आउट टू बी 11001. अगेन +1, so it comes out to be 11002. So what are the three natural numbers next to 10,999? That is 11,000, 11,001, 11,002. That means you have to find the three successors of a given number. Is it clear, students? Now just see the next question. Write the three whole numbers occurring just before 10,001. Now that means the predecessor has been asked to you. इस केस में आप क्या करेंगे? You have to perform the operation of subtraction. अब आपसे क्या पूछा गया? numbers just before it. तो before numbers कौन से होते हैं? That is predecessor. So question number 2, what is the number given to you? That is 1 0 0 0 1. Now what you have to do? You have to do the subtraction. इसके पहले वाले numbers आपको find out करने. That means you have to do -1. कितने नंबर्स फाइंड आउट करने हैं? दैट इज 3. सो यू कैन जस्ट सी ओवर हियर. देन द नेक्स्ट नंबर, इसके जस्ट पहले का नंबर क्या होगा? दैट इज व्हेन यू विल जस्ट सब्ट्रैक्ट -1 करोगे तो 9999. अगेन व्हेन यू विल जस्ट डू -1, द नेक्स्ट नंबर विल कम आउट टू बी 99998. सो दीज आर द थ्री नंबर्स जस्ट बिफोर 10,001. Now question number 3, which is the smallest whole number? It's very much easy, as I've already told you, that is 0 is the smallest whole number. Okay, now just see question number 5. Write the successor of. Write the successor of. Question number 5, just see B part. You have to write the successor of the number 100,199. That means successor जब भी find out करना होता है तो what we will do? We'll just add 1 to it. So what will it be? 100,200 is the successor of 100,199. Now just see question number 6. That is you have to write the predecessor of the numbers. So question number 6. It's very much easy. Just see B part. 1 2 3 4. Predecessor find out करना है, मतलब आपको क्या करना है? That is you have to just find the before number. इसके just previous number कौन सा? That means you have to subtract 1. तो क्या आ जाएगा? 9999. That is 9,999 is the number. Now children, just come to the next exercise over here. That is exercise 2.2. Just take it out. 2.2. It's page number 40. Just come to page number 40. Exercise 2.2, page number 40. Now just see. Find the sum by the suitable arrangement. You have to find the sum by the suitable arrangement. Just see question number 1, first part. Question number 1, A part. So 837 plus 208 plus 363. So you can add the numbers by combining it. तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे. So 7 plus 8 is 15. 3 plus 1 4, 8, 9, 10. 1045 plus 363. Again you can add the numbers. 5 plus 3 is 8. 6 plus 4 10. 3 plus 1 4. So your answer comes out to be 1408. Now just see question number 2. You have to find the product of the numbers. Okay, so we'll just move to the question number 2. You have to find the product by doing the suitable arrangement. So question number 2,
just see the B part over here. So 4 into 166 into 25, 4 into 166 into 25. तो हम जब भी हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है तो हम ऐसी टर्म्स को कंबाइन करते हैं जिससे कि हमारा मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाए, it becomes more easy. So what we will do, first we will just combine these terms, 4 into 25 into 166. So when you are doing the product of 25 4s are 100 into 166. So your answer comes out to be 16600. That is 16,600. Okay. Similarly, you can just do the other parts also. Now just come to the question number 3, in which you have to apply the properties that we have already discussed. So question number 3, find the value of the following. Just see the B part over here. 54279 into 92 plus 8 into 54279. Now children, which property you can apply here? Can anybody tell? Yes, you can apply the distributive property, that is A into B plus C is equal to A into B plus A into C. So you will just take common from here, that is 54279 into 92 plus 8, with the property which you are just applying, you have to mention distributive property. This is known as the distributive property. So 54279, 92 plus 8 is 100. So your answer comes out to be 5427900. So this is the answer. Now just see next question over here, that is you have to do the product. See the question number 4 of this exercise. Question number 4. What does the question number 4 says? That is you have to find the product using the suitable properties. So just see B part over here, that is 854 into 102. यदि आप इसको सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा. एंड इफ़ यू आर अप्लाइंग द प्रॉपर्टी ओवर हियर इट विल बिकम मच मोर ईजी. सो यू कैन जस्ट डू 854, इसको 102 को हम क्या कर देंगे, स्प्लिट अप कर देंगे. 102 कैसे लिख सकते हैं, that is 100 plus 2. That is you are applying the distributive property over here. You are applying distributive property. So A into B plus A into C, कौन सा फॉर्म चल रहा है, A into B plus C is equals to A into B, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस A into C, that is 854 into 2. So 85400 plus 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 8s are 16 plus 1 17. तो जब आप इसको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 plus 8 8, 0 plus 0 0, 7 plus 4 11, 6. So your answer is 86108. Okay children, now just come to the next exercise over here, the last exercise of this chapter, that is exercise 2.3. Now just see exercise 2.3, question number 1, which of the following will not represent 0? You have to just see that which will not represent 0. So just see the question over here, exercise 2.3, question number 1, A is 1 plus 0, second part is 0 into 0, third is that is 0 upon 2, and the D is 10 minus 10 upon 2. What is the question, that which number will not represent 0? So 1 plus 0 क्या हो जाएगा, 1. So it is not representing 0. It does not represents 0. Now the next is 0 into 0. It's obviously 0. So it is representing 0. Third option 0 by 2 is, that is 0.
10 minus 10 again 0 upon 2 which is 0. So only there is one part which is not representing 0, that is a. 1 plus 0 is equals to 1. So children, that's all for today. I hope whatever I have taught you, you understood it well. So please keep on practicing the questions. Thank you.